Good evening, Ji. Uh, number of students since last 3 years, they have been confronting with this question that how to apply theories in the paper of IR. It's a very much relevant and concerned question, and particularly in the wake of how the teachers, the academies, as well as students, that the way they are preparing and they are imparting knowledge to their students. This particular aspect of applying theories in the paper of IR has generally been overlooked. There are primarily, I believe, there are two factors behind this fact that why this particular aspect of theory application, students also don't focus on it, as well as uh, teachers and academies, they also don't pay proper attention because it's a whole different ball game, you know. So before the start of it's going to be a 30 minutes session, Ji, and my intention and my suggestions would come before you so that serious students may further read relevant texts. Two important texts are very much relevant as far as if you want to study theory application. Number one is Theories of International Relations by Andrew Linklater. Theories of International Relations by Scott Brout and Andrew Linklater. One of the most refined book on theories of international relations. You would come across, an average student would come across that the authors have philosophized the theory or the context overall, but theory, unless and until it is not philosophized, it is not a theory. So don't go for average books and read specific book content and specific concept from a relevant book. Second important source as far as theory application. Now, this particular book is regarding the theory that you would not only understand theory, but as well as you would come across that how theory was philosophized. Second source is one of the most relevant and most updated source, which generally has not been mentioned. It's a reference book. It is Perspectives on International Relations by Henry No, N-A-U, Henry R. Now, N-A-U, No. I have the 5th edition and 6th edition have been published in 2018. It's a bit expensive, but 7 or 8 students may contribute and they can purchase 5th edition or 6th edition. I guess 5th edition is of 11,000 maybe, and 18th edition is somewhat near 13 to 14. 6th edition 13 to 14,000. So 7 to 8 students may contribute and they can purchase it. You will not come across this book in PDF form online. It's a reference book, and you would come across this book in NDU, even in Qadir University, but I haven't come across this book in Lahore in any center or in any library. So you can ask for the book from any renowned bookshop in Lahore. If you are in Islamabad, you can pay a visit to NDU, and where you will come across this book. Now, these are the sources. Reason I was telling you that number one, teachers, academies, and the students, they're only focusing on completion of the syllabus. We also do the same thing. It is the requirement of the market
Students used to take topics from their syllabus. ये topic हो गया, ये नहीं हुआ, ये हो गया, ये नहीं हुआ. So theory application तो कहीं भी नहीं है पूरे syllabus में. Yet each and every concept, each and every historical development in the paper of IR, you cannot score good marks unless and until you would not incorporate theories. So one of the most important reason is that teachers, academies, and as well as pressure from students, and students too, they're not concerned about the application, rather just cover their syllabus, that's it. तो ऐसे नहीं होता भाई. ऐसे तो फिर जो आ रहे हैं, जिसके नंबर आ रहे हैं और जैसी तैयारियां होती हैं, ऐसे ही होगा. Second important aspect is that students, their preparation and the way they learn things from their teachers, or the way they are inspired from CSPs, particularly from 16, 17, and most recent from 18. So what they gather information from those CSPs, from those teachers, which ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, and that's it. एक आधी ये किताब उठा लो, एक आधी ये किताब उठा लो. हो जाता है इस तरह, लेकिन मजा नहीं आता. So your preparation should be up to that level that even if you would confront a question in the paper which uh, portrays a situation whereby it looks like it is only a question of current affair, you must have the ability to incorporate theories, perspectives, level of analysis, causal arrows in that particular question as well. So the instructions from the teachers and from the CSPs, most recent since the last 3 years, students primarily rely on such teachers and on these CSPs. So these are the two concerns and the two sources which I have informed you. Now, how to apply? Well, my strategy is simple enough. Read, read, and read. If you're not a good reader, you are not a serious student of CSS, or so to say PMS of all provinces. How to apply theory? I will discuss two case studies today because I don't have much time. It's just a half an hour session. I will discuss two case studies along with the hierarchy, how to apply theory. So the first thing which you must keep in your mind is level of analysis. Level of analysis. Now basically, if you read traditional books, you would come across 3 to 4 level of analysis. But in Henry Now, you would come across 3 level of analysis along with foreign policy level of analysis. He deals foreign policy level of analysis as a separate analysis, and 3 level of analysis are separate. As far as 3 level of analysis are concerned, तो वो कहता है जी आपको systemic level of analysis, domestic level of analysis, and individual level of analysis. अब हमें क्या पता जी, अब तो बता दिया, अब इनको कोई एक्सप्लेन भी तो करे ना जी. तो वो दो केस स्टडीज में रहते हुए हम इसको will try to explain. One is a systemic level of analysis, that if you are studying a particular development, a particular conflict, that how global forces they have their interest, or how they are viewing it, or how they are playing their role. So when you would deal with global powers, global institutions, global ideologues, and apply them in a particular conflict and particular crisis situation, you are engaging in a systemic level of analysis. Then
domestic level of analysis. Acha ji, the content of my lecture is very much not, short content. It's a vast and immense content. So it will be difficult for me to answer any questions. If you have any queries or stuff like that, so you may message me. ID is clear. You may message me afterwards. But here in these 30 minutes, I want to enlighten students, at least even a single एक आदमी भी अगर समझ जाए बात को तो सदका जारिया. Now, systemic level of analysis के बाद the second one जो Henry Now mention करता है, that is domestic level of analysis. Regional level of analysis भी कहते हैं. Regional forces, either regional institutions, regional ideologues, regional identities, regional power brokers, regional states, how they are engaged in a particular conflict or a crisis. And then individual. Here we'll specifically deal with small groups, identity politics groups, leadership, de facto leadership, de jure leadership. So from these level of analysis, basically आप address क्या करते हैं? आप address करने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी forces हैं कि जो इस conflict को, इस issue को, इस development को के पीछे एक deriving force है. क्या वो systemic level से हैं, क्या वो domestic से हैं, क्या वो individual से हैं. और ये simple इतना काफी नहीं है. Simultaneously, you have to deal with perspectives. Now, after level of analysis, second thing is perspectives. It is the issue of theory. It's the issue of theory. Now, there are four major perspectives. Realist perspective, which will deal power. Liberal perspective, which would deal with interactions, either successful interactions or failed interactions. Identity perspective, which would deal with ideologies, dominant identities, which shaped or reshaped a particular crisis, conflict, or a development. And then critical theory perspective. Well, a critical theory perspective, since its origins are linked with Marxism, so ये तो बहुत आसान है. Critical theory perspective को when you will apply on level of analysis, so the outcome would be same for systemic, for individual, for domestic. Their interpretation would same because they would hit the overall this nation-state system idea, the states, this overall stuck international system, international society. They would hit it. They would criticize it. It's very much easy when you read critical theory perspective. But as far as realist, liberal, and identity perspective is concerned, you would find some variations in these perspectives. So you would apply level of analysis within the framework of these perspectives. And then last thing, we're discussing key ideas, and then we'll come towards two case studies to understand. Now the third thing is the causal arrow, asbab. From these level of analysis, which level of analysis is the most defining and dominant force? From these perspectives, which perspective is the most dominant and defining perspective? In your causal arrow, you would handpick three major ideas, three major forces, that these are the three major aspects. For instance, it may be
A liberal perspective in a systemic context, its application on an identity perspectives, individual level of analysis may be possible, different schemes. That's why I have recommended Henry Now, because Henry Now, starting from World War One till 9/11 and this war on terror, and the most recent edition includes Syrian crisis and Yemen crisis as well. तो वो हर जगह पर आपको लेवल ऑफ एनालिसिस, पर्सपेक्टिव्स एंड कॉजल एरोज जो है वो बना के क्रिएट करके देता है। तो 4-5 अगर पढ़ लें तो यू वुड अंडरस्टैंड द आइडिया एंड यू वुड इन a better position to apply those ideas in your paper. तो ये तो था एक सरफेस पे बातें जो है रिपीट कर देता हूँ ताकि एक दफा बात क्लियर हो जाए। लेवल ऑफ एनालिसिस, 3 level of analysis along with foreign policy level of analysis, decision making अलग था। Then perspectives, realist, liberal, identity. Basically when you say identity तो constructivist बात होगी ना जी, and critical theory. And then causal arrow, out of those different level of analysis and perspectives, which are the 3 most important and defining one. क्योंकि 20 नंबर के सवाल में आप हर तरह के लेवल ऑफ एनालिसिस और हर पर्सपेक्टिव में रहते हुए हर तरह का लेवल ऑफ एनालिसिस वो लिखेंगे, वो तो ऐसे बन जाएगा पूरा। सो वो 3 डिफाइनिंग आपको जो है वो निकाल के देता है हर जगह पे, हर जगह पे, हर जगह इजी हो जाता है। नाउ जी, since I've requested जी, because lot of content अभी मैंने case studies 2 बताने, so it is difficult to answer any question. If you have any question, so you may message me after the session, or you may message me anytime. If I find time, so I would definitely reply. Now, अब आते हैं फिर 2 केस स्टडीज देख लेते हैं, कुछ 2 केस स्टडीज, और उन केस स्टडीज में देखते हैं फिर हम कि ये लेवल ऑफ एनालिसिस कैसे अप्लाई होंगे, और आपको ये बात समझ आ जाएगी कि इवन इन योर पेपर 2 जब वो आपसे पूछता है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, सपोज, या आपसे कोई भी वो हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है या कोई भी करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप समझते हैं करंट अफेयर का क्वेश्चन है, वहां पर थ्योरी एप्लीकेशन होनी है, ये ज़हन में रख लें। इवन इन पेपर 1 जब वो एक की कॉन्सेप्ट को लेता है, लाइक से बैलेंस ऑफ पावर को वो चाइना का राइज देखता है, चाइना के राइज से जनाब रीबैलेंसिंग ऑफ द पावर देखें जनाब साउथ चाइना सी में, एशिया पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक राइवलरीज में, तो क्या आप नरेट करेंगे? करंट अफेयर का पेपर तो नहीं है। It would definitely apply these perspectives, these level of analysis, and उसमें रहते हुए आप स्पेसिफिकली इनका चार्ट बना देंगे आप, और उस चार्ट में से फिर आप 3 से 4 अपने जो आपने कॉजल एरो बनाए होंगे उनको इंटरप्रेट कर देंगे, तो आपने पूरे का पूरा एक उसको चार्ट भी दे देंगे और उसको फिर नीचे इंटरप्रेट भी कर देंगे। ये है आईआर का पेपर। इट्स नॉट लाइक दैट कि बस ठीक है लिखी जाओ। लेकिन सारे स्टूडेंट्स एंड इवन टीचर्स एंड इवन अकेडमीज सारे इसी पर्सपेक्टिव में, इसी काम में चल रहे होते हैं, मार्केट है, बिजनेस है। लो जी, केस स्टडीज देखते हैं जी। अच्छा, पहले एक केस स्टडी देख लेते हैं जी ना, आईएसआईएस की। आईएसआईएस की फॉर्मेशन कैसे हुई, ये कैसे इवॉल्व हुई, इसने कैसे इतना बड़ा इशू बन गया, फिर उसके बाद ऑफ कोर्स डिक्लाइन भी कर गया, लेकिन कैसे हो गया जी, क्यों हो गया? सो लेट अस अज्यूम कि हमें क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट वर द कॉजेस behind the formation of ISIS. बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। अब do not make it a question of current affairs. If it is a question of current affairs, सीधा सीधा 5-6-7 हेडर्स हैं आपके पास, दैट्स इट, कोई मसला ही कोई नहीं। इस तरह का सवाल तो हलवा है। सो यार में सवाल आ गया, हमको मौजे होगी क्या बात? नो, नॉट लाइक दैट। आपको करना क्या, आपको देखना है सबसे पहले आपको अपने हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्लियर करने उस टॉपिक से रिलेटेड, एंड देन आप अप्लाई करेंगे उस पर पर्सपेक्टिव्स में रहते हुए। लेट्स से स्टार्ट करते हैं जी, रियलिस्ट पर्सपेक्टिव। नाउ रियलिस्ट पर्सपेक्टिव में पहला सिस्टेमिक में देख लेते हैं। इन सिस्टेमिक में अगर हम देखें तो जनाब ग्लोबल पावर्स
particularly in their bid to withdraw troops from Iraq. It created a political vacuum. It was a blunder on the part of major forces, US, to withdrawal of forces from Iraq. अब point बड़ा आसान सा है, withdrawal of troops from Iraq, that's it. लेकिन करंट अफेयर का पेपर नहीं है, आप उसको एक चार्ट में लेके आएंगे कि जनाब ये सिस्टमिक लेवल ऑफ एनालिसिस हो रहा है रियलिस्ट पर्सपेक्टिव में, पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया। डोमेस्टिक में आ जाए, in the 20th century, one of the most important reasons behind various conflicts and crises in the Middle East is because of the power struggle and the so-called hegemonic designs created by each and every Arab state. So the hegemonic designs of the Arab states, they are engulfed with each other in such a way that they just overlooked the formation of ISIS, and they were quarreling with each other for their supremacy in the region. आसान बात, लेकिन level of analysis के context में. And then the individuals. Now, in a realist perspective, individuals, particularly Bashar al-Assad, strategies Bashar al-Assad created such a chaos or anarchical situation. Now, this anarchy is not the anarchy of IR, rather that is anarchy of politics. Created such an anarchical situation that none of the powers within Syria was capable enough to dominate. Resultantly, a third party captured the whole scenario. Now, जनाब आप एक सिस्टमिक में आ गए, अच्छा अब आ जाते हैं फिर लिबरल में। लो जी लिबरल, अच्छा ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है that generally we think that एक चीज रियलिस्ट पर्सपेक्टिव में डिफाइन है जी, तो अब इस पे और कोई थ्योरी अप्लाई नहीं होगी ना। You can apply these perspectives in every development, in every field of cooperation as well as conflict. जैसे अभी अप्लाई करके देखते हैं, लिबरल पर्सपेक्टिव में देखते हैं जी। Now, liberal perspective में पहले आने सिस्टमिक। Global institutions have miserably failed to uplift socio-economic conditions of Middle East. UN development programs, UNDP, Millennium Development Goal, so to say now Sustainable Development Goal. Huge claims have been highlighted by these global major organizations pertaining to quality of life, but the quality of life of Middle East was never effectively addressed. In addition to that, the role of UN is also question mark, particularly in solving disputes in Middle East. तो आ गया ना जी लिबरल पर्सपेक्टिव। जरूरी नहीं है कि आपने कॉपरेशन करके दिखानी है, जरूरी ये भी है कि आप ये भी बता दें कि देखें जी कॉपरेशन नहीं हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिनकी के कॉपरेशन करवाते, मसले हल करवाते, नहीं करवाया, इस वजह से हुआ, तो लिबरल पर्सपेक्टिव आ गया। सो ये चीज ज़हन से निकाल दें दैट एक थ्योरी आपने एक डेवलपमेंट पे अप्लाई कर दिया है तो अब ये जनाब बस खत्म, अब कोई और थ्योरी नहीं अप्लाई हो सकती, ऐसा ना। एंड जी नेक्स्ट सिस्टमिक हो गया, इसके बाद जनाब आपका डोमेस्टिक हो गया। ना डोमेस्टिक में लिबरल पर्सपेक्टिव में देखना आपने, बहुत मजेदार काम है यार, एक दफा इस काम में आप आ जाएं, रीड करें। दुनिया का कोई उस्ताद, दुनिया की कोई एकेडमी आपको वो मजा नहीं दिलवा सकती जो आपको रीडिंग से मजा आएगा। ना लिबरल पर्सपेक्टिव में आ जाए। अब लिबरल पर्सपेक्टिव में डोमेस्टिक यानी कि रीजनल, बड़ा मजेदार एनालिसिस है। मिडिल ईस्ट की इकोनॉमीज, उनमें वो इंटरडिपेंडेंसी बन ही नहीं सकी कभी, बिकॉज ऑयल पे डोमिनेट करने, ऑयल एंड गैस पे लार्जली, सो उनमें वो इंटरडिपेंडेंसी ट्रेड की बन ही नहीं सकी। दे आर नॉट कनेक्टेड इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। जब स्टेट्स इंटरकनेक्टेड होती हैं तो तब वो टेबल पे बैठती हैं।
जब वो इंटरकनेक्टेड नहीं होती इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो वो फिर टेबल पे नहीं बैठती, डिफरेंसेस बनना शुरू होते हैं और उन डिफरेंसेस को फिर थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी जो है वो मिसयूज कर जाती है। सिंपल इजी बात, लेकिन एक नए एंगल से आपने पर्सपेक्टिव में रखते हुए बात कर। Individuals, rulers in Middle East has miserably failed to promote human rights. Their bid to consolidate their rule in nearly all Middle Eastern countries has created a political havoc. People are disappointed. और उसमें जब फिर आई अरब स्प्रिंग, तो लोगों ने रिटेलिएट किया, रूलर्स ने उसको क्रश किया, रिजल्टेंटली एक वैक्यूम बना, एक chaotic condition. So Middle East के rulers, they are responsible because they have failed to address human rights, they have failed to incorporate liberal democracy in Middle East. So आ गया ना जी liberal perspective. Now identity perspective. Now as far as identity perspective is concerned, direct constructivism, social constructivism के context में अब देखते हैं जी फिर इस ISIS की फॉर्मेशन और फिर इसके साथ जो है वो फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स बड़े की रोल, और उसमें साथ जो आप थोड़ा सा सीरिया को भी साथ लिंक कर लेंगे, सीरियन क्राइसिस को। सिस्टमिक में देखते हैं जी, Middle East, particularly since the start of Cold War, all the players in Middle East, they played in the hands of the two powers, USSR and US. So the identities of Middle East were defined by external forces. Few states, they were loyal towards USSR, few states were loyal towards US, then position again changed and the loyalists turned into rebels like Iraq. So Middle Eastern states, their entities were formed, shaped, reshaped since the Cold War by the external players. सेकंड पे आ जाते हैं जी फिर, और यही है फिर हमें यहां भी नजर आता है जी ISIS की formation and how to deal with ISIS was not an initiative primarily by the Middle Eastern any Middle Eastern Union or any Middle Eastern state started that union. ठीक है जी। Okay, there's such a problem in my laptop. अच्छा ठीक हो गया, ओके जी। नहीं रीलोड तो नहीं मुझे करना, यहाँ से ठीक है। नाउ अगेन रीलोड नहीं करना भाई, रीलोड मुझे, अच्छा ये लैपटॉप जरा गर्म हो गया थोड़ा सा, ओके नहीं करना भाई रीलोड, दोबारा दोबारा वो बताता जा रहा है, नॉट सेव, चलो कोई बात नहीं। अच्छा जी, नाउ डोमेस्टिक में आ जाते हैं। शिया सुन्नी conflicts, Shia Sunni segregations in Middle East has played a pivotal role in the formation and the development of this whole process which we are discussing. Then individual identity, the question of unruling the de facto ruler, that is Bashar. समराइज कर रहा हूं मैं क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, मुझे और भी काम है जरा एक दो, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए आपको, आज का मकसद था कि मैं बताऊं कि एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपकी बन जाए ना। इसी तरह की एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन अब जो एग्जांपल मैं लेने लगा हूं वो स्पेसिफिकली मैं पर्सपेक्टिव्स में रहते हुए आपको बता दूं। 9/11 क्यों हुआ जी? अच्छा रियलिस्ट पर्सपेक्टिव में आ गए, तो रियलिस्ट पर्सपेक्टिव में was weak versus strong.
those who believe we are weak, realist perspective, those who believe we are weak, हमें retaliate करना चाहिए against the strong, realist perspective. अब इसको आप तीन में डिवाइड कर सकते हैं, ग्लोबल लेवल पर आपने अटैक किया, डोमेस्टिक आपने मिडिल ईस्ट में भी अटैक किए, आपने कीनिया में भी किए, इधर उधर भी किए, इंडिविजुअल्स की भी जो है वो स्टार्टिंग फ्रॉम खालिद शेख मोहम्मद एंड हिज नेफ्यू एंड फिर आफिया एंड स्टफ लाइक दैट, दोज हु आर नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली विद अल कायदा, लेकिन वो वीक वर्सेस स्ट्रॉन्ग का आइडिया जो है वो हमें नजर आता है, तो आप उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. देन लिबरल पर्सपेक्टिव में आ जाए, failure of negotiations. On all types of failures of negotiation, particularly related to Arab-Israel conflict, because जो बेस है 9/11 के पीछे वो अलकायदा है, और अलकायदा की इमर्जेंस जो है वो मिडिल ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में, तो उसको आप सिस्टमिक में देखें, डोमेस्टिक में देखें, और सिस्टमिक में देखना तो आपने देखना जहां जहां मुस्लिम कंट्रीज हैं या मुस्लिम्स के जहां इश्यूज हैं वो प्रॉपरली एड्रेस नहीं हो सके, प्रॉब्लमेटिक रहे, जेनोसाइड्स भी हुई, ये हुआ जी, वो हुआ जी, बड़ा इजी हलवा काम बन. एंड देन फिर आइडेंटिटी पर्सपेक्टिव, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट्स, and the involvement of foreign troops. The coming of foreign troops in Middle East, concerns, apprehensions were raised in वो आप जो है तीनों फेजेस में उसको, नॉट नेसेसरली कि आपने धक्के से किसी चीज को लेके आना है. जब आप ला रही है ना, ये तीसरा एस्पेक्ट जो है कि आइडेंटिटी पर्सपेक्टिव में कि जो एप्रीहेंशंस कंसर्न्स इवॉल्व हुए इन मिडिल ईस्ट पर्टेनिंग टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फॉरेन ट्रूप्स, तो उसको सिस्टमिक में ना लेके जाए, वो डोमेस्टिक में रहेगा, इंडिविजुअल पे रहेगा. जरूरी नहीं है कि हर पर्सपेक्टिव हर जगह पर आपको कोई लॉजिकल कंक्लूजन भी दे. इसीलिए तो आखिरी स्टेज रखी हुई है ना कॉजुअल एरो की. कैजुअल एरो जो है वहां पर आप कोई से 3 से 4 मेजर लेवल ऑफ एनालिसिस में से, पर्सपेक्टिव में से बातें निकाल के उनको आप इनकॉर्पोरेट करते हैं. So whenever you would confront a question in paper 1, paper 2 of IR, I'm sorry, so try to incorporate theories, try to apply theories, and applying theory is very simple, provided that you are not relying on any average text, you are not even relying on this particular lecture, but you would read the theory in its entirety and philosophize the theory as the authors have done from Andrew Linklater's book Theories of International Relations, and then Henry Now, Perspectives on International Relations. आपको 10-15 नंबर का फर्क है जी आपका पोल साइंस के साथ, कोई 10 से 15 नंबर का फर्क है. एवरेज मार्क्स आईआर के जो मेरे पास जितनी डीएमसी स्टूडेंट्स की आई थी, राउंड अबाउट मोर देन 200 डीएमसीज, तो उसमें वो 112 का बनता है, और पॉलिटिकल साइंस का कोई 122 से 125 का बनता है, तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है. आप इस डिफरेंस को कवर कर सकते हैं. आपके पेपर में 2 से 3 सवाल लेवल ऑफ एनालिसिस पर, थ्योरी एप्लीकेशन पर आप उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, बताते हैं, तो ये आप डिफरेंस को खत्म कर सकते हैं. ऑब्जेक्टिव पे फोकस करें जी जरूर. कुछ अच्छे पब्लिशिंग हाउसेज ने, ज़ाहिर आपको वैसे तो नहीं मिलते, पब्लिशिंग हाउसेज के ही ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं, तो कुछ अच्छे पब्लिशिंग हाउसेज ने अपने ऑब्जेक्टिव्स मार्केट में रखे हुए हैं, उनको देखें, उनको जरूर जो है वो क्रैम कर लें. मतलब 40 मार्क्स हैं आपके, तो एटलीस्ट 30 to 35 तो आपको वहां से लेने चाहिए. ओके जी, एज फार एज योर क्वेश्चंस आर कंसर्न, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन क्वेरी, तो मैं अभी इसको अपलोड कर देता हूँ, एंड देन यहाँ पे भी मैं देख लूंगा जिन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए होंगे. एंड इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन इन डिटेल, तो यू मे मैसेज मी. मेरे पास टाइम होगा तो मैं इंशाल्लाह जरूर देखूंगा, बट आई नॉट प्रॉमिस. आई विल कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट्स जी. ऐसी चीजें कि जो हम जो है वो जरा हट के थोड़ा सा पर्सपेक्टिव हो जाता है, जो कि मेरे खुद के स्टूडेंट्स के लिए भी फायदे में रहेंगे, और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी. ज्यादा लंबे सेशंस में नहीं लूंगा, इट्स ऑलरेडी
हाफ एन आवर जी हो गया। सो बेस्ट ऑफ लक जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। परेशान ना हो, फॉर्म जब भी आएंगे और आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो जारी रखें। थैंक यू जी।